Mute the Campus, and I am presenting an idea, advanced energy meter. Next slide, please. The introduction was advanced energy meter is the advanced and modified term of the smart energy meter. In this idea, we have creating more flexibility, universal link, and using the Internet of the Things and the microcontrollers, increasing the measurement accuracy and the security issues. It's also detecting the faults happen in the meters or the transmission line. Next slide is innovation idea. In this meter, in this idea, we have not only focused on the consumptions of the electrical energy, or called units, but we also detecting the power theft and the bill predictions through the message alarm, and also detecting the fault. Any fault occurs in the transmission line, we can detect that through the IoT and message alarm. Detecting any kind of the theft and wrongdoing interruptions meters in the meter and transmission line with alarm alert the consumers and the control stations through the message, and we can also block the meter anytime from the control stations. That we can increasing the flexibility billing options, rating static data, and the emergency alarm system. Next slide, please. Implementation. This idea is only implemented only there where the internet of availability of the Internet of Things and the networking, because without internet we cannot implement this idea anywhere. In the implementation for, we require some things like the system control, RubyCep, data transmission, networking, connection server, application server, database, and the Internet of External System and the GSM systems. Next slide, please. This is a totally block diagram which is elaborate the complete system working. RubyFi system that is totally, जिसमें क्या होता है कि जो भी सिस्टम होता है हमें मतलब मॉनिटरिंग करना होता है, तो हमें क्या होता है RubyCep जो होता है यहाँ पे हमारा कंज्यूमेशंस, वो हमें क्या होता है इंटरनेट के थ्रू हमें मॉनिटर करना पड़ता है, और वो हमें क्या करता है सेंड करता है सारी डेटा टू द डेटाबेस हमें वो हमें सारी बताती है क्या है, कितनी कंज्यूमेशन हुई है, क्या बिल प्रोटेक्शन होती है, हमें सारा सिस्टम वो जो है हमारा उसमें होता है। तो वो सारा हमें कंट्रोल स्टेशन एज वेल एज हमारा जो कंज्यूमर है दोनों को हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मार्केटिंग बेनिफिट्स, इसमें क्या होता है कि हमें क्या होता है लो कॉस्ट में मतलब जो है, और लेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होती है, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी इसकी हाई होती है, इजीली मॉनिटरिंग एंड सेविंग द इलेक्ट्रिक पावर, एलिमिनेटिंग द मैनुअल मंथली रीडिंग्स, जो हमें मतलब मंथली जो होता है मीटर रीडर, तो हमें हमारा सारा सिस्टम जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, वो हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू द IoT बेसिस पे इन द लो कॉस्ट एंड इजीली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें फीचर मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, हमें सिंपली वी कैन मॉडिफाई यूजिंग द कैमरा सिस्टम, हम कैमरा सिस्टम में उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इन द जैसे कि हमें क्या होता है, जैसे मोबाइल सिस्टम था फर्स्ट वायरली था, एंड अब वो हो गया एंड्रॉइडर, एंड थ्रू द IoT सेम सिस्टम हम ये क्या होता है कि हम मीटर को भी हम क्या होता है कि हम वायरलेस सिस्टम भी बना सकते हैं इसको।